अच्छा, तो मैडम सायरा, we're now finally back on the island after the same island after 11 episodes, I believe. After 11 episodes and 3 months. 3 months? Almost 3 months. We started in August. हाँ. We started in So August. how does it feel to finally have your dream come true? Oh, my dream. Yes, it was your dream. Yes, it was not my dream. Yeah. But yeah, it was something which I really wanted to do. Yeah. As I mentioned in the first episode as well. कि जब हम IVLP पे गए थे, हाँ. and I mentioned that I want to do a podcast. Yeah. Which was on a different theme. Yeah. Which eventually became what we have done. Yeah. And so it sounds good. Yeah. Feels kind of an achievement. Yeah. कि हाँ कुछ सोचा था and वो it has come through. Yeah. And come through nicely. Yeah. In every way, like visually, content wise, theme के लिहाज से. So I believe it wasn't perfect, but it wasn't perfect because it was a learning phase for us as well. yeah. We have not done productions like this. ठीक है, आप as a person who is managing the project for a production is something else. Yeah. Being part of the production. Yeah. जहाँ आप ही DOP भी हैं, आप ही कंटेंट देख रहे हैं, आप ही बैकएंड देख रहे हैं, आप ही फ्रंट एंड देख रहे हैं और आप ही होस्ट हैं. हाँ. आप गेस्ट्स को भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एंड टू एंड, सारा कुछ एंड टू एंड कर रहे हैं. सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस उस लिहाज से. तो आई एम श्योर कि व्हेन वी विल डू द नेक्स्ट थिंग तो वो इससे बहुत बेहतर होगी. इंशाल्लाह. Learnings around it. Yeah, for sure. क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा learning थी, क्योंकि as I said to you also कि I was not mentally prepared for what I put myself through, because ना मैंने कभी सोचा podcast के बारे में कि मैंने करना है, ना कभी मैंने hosting के बारे में सोचा, ना ठीक है मैंने हल्की फुल्की corporate events की editing वगैरह recording की हुई थी, but इस scale पे नहीं की हुई थी. So मेरे लिए तो वो बहुत painful था, like it was fruitful also. It was a cultural shock for you. It really certainly was a cultural shock, like बहुत ज़्यादा. Yeah. मैंने documentaries उस तरह से की हुई हैं when I was working with the corporate, so I've done a lot of documentaries उस तरह से जिसमें production teams के साथ काम किया हुआ है end to end. But being on the front of the camera, one thing, and then to some extent yes, there is a lot of like input उस तरह से भी कि अगेन जब हम लर्निंग्स पे बात करेंगे तो मे बी आई विल टच अप. अगला सवाल यही है, तुम लर्निंग्स बता ही दो. तो जैसे साउंड का मुझे इतना आइडिया नहीं था बिफोर वी डिड ऑल दिस, क्योंकि नॉर्मली जब भी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं या कॉर्पोरेट्स के लिए शूट्स मैंने अगर करवाए हैं तो उसमें एक टाइम पे एक ही बंदा बात कर रहा होता है, क्योंकि हम उस बंदे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. यहाँ पे एक तो हम 2 थे, बाय डिफॉल्ट हम 2 लोग थे, एंड देन वी ऑल्सो प्लान्ड टू डू समथिंग बिग. तो वी डिसाइडेड कि हम एक से ज्यादा गेस्ट बुलाएंगे, एक से ज्यादा भी, लाइक वी इवन इनवाइटेड 7 to 8 people in one of the podcasts. 2 episodes. तुम्हारी दोस्त हैं और मेरी दोस्त हैं. हाँ, सो एक में 9 लोग इन टोटल, हम 9 लोग थे, एक में हम इन टोटल 8 लोग थे, फिर हमारा था जिसमें 4 गेस्ट थे तो उसमें हम टोटल 6 लोग थे. सो इट वाज अ बिगर ऑडियंस, मोर नंबर ऑफ पीपल. सो वो जो साउंड के इश्यूज हमने फेस किए स्पेशली इन द एडिट्स, दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी. या एंड ऑल्सो हमने प्रॉपर सेट कहीं नहीं लगाया, ये हम मेरे घर पे ही घर पे हम ये कर रहे हैं. तो उस लिए मतलब एको कंट्रोल करना, साउंड को रिकॉर्ड करना, माइक्स के मसले, हालांकि हम जितने भी लोगों से हमने साउंड की बात की उन्हें वो हमेशा क्योंकि कॉर्पोरेट का काम करते हैं, सो दे वुड से कि उसमें तो कोई इशू नहीं आता. बट देन वी से क्योंकि पॉडकास्ट के माइक सेपरेट होते हैं, उसका इनपुट आउटपुट वो चीज़ें, उसके बाद एडिट्स तो खैर आई वुड से इट वाज अ नाइटमेयर. It was a nightmare every other night. Because हम सुबह से जाते थे, सुबह 9 बजे 10 बजे से लेके रात 9-10 बजे, at times 11 बजे तक भी we were constantly sitting with the editor and getting the edits done. और ये वो है जो हम final edit करते थे. अच्छा, इसमें थोड़ी सी ये भी है
इशू एडिट्स में इसलिए भी आया क्योंकि जिन लोगों से हम एडिट भी करवा रहे थे वो हार्डकोर पॉडकास्ट का एडिट नहीं करते हैं, सो वो इट वाज अ लर्निंग। पता नहीं उन्होंने कितना सीखा कि नहीं सीखा हमसे, बट एटलीस्ट हमने तो बहुत सीखा, हमने कोशिश भी की सिखाने की, बट जिस तरीके से हम एडिट करवाना चाह रहे थे वो बेचारों ने मेहनत की, जो भी वो है उन्होंने क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू दे डिड। ऑडियो के इश्यूज थे, ऑडियो पे बहुत मेहनत हुई। द पर्सन हु वाज डूइंग द एडिट्स ही वाज वेरी टेक्निकल, ही वाज साउंड इन हिज वर्क, ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, ही न्यू क्या इश्यूज हैं, कैसे इसको रिजॉल्व करना, द मैक्सिमम ही कुड डू ही डिड दैट एंड ही डिड वेल, बिकॉज़ वी नो कि ओरिजिनली क्या था एंड व्हाट ही ब्रॉट आउट ऑफ दैट होल ऑडियो सीन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट के जो एडिट हम बैठ के करवाते थे वो तो फाइनल एडिट था। उससे पीछे जो हम फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट जो हम घर पे बैठ के करते वो भी एक अच्छी खासी ख्वारी थी। मतलब अगर मैं उस तरह से कैलकुलेट करूं, पर एपिसोड हमें एटलीस्ट 1 हफ्ता एडिट पे लगा है, बिकॉज वी यूज्ड टू डू द फर्स्ट कट हम करते थे एंड इट वाज लाइक होल डे, फिर सेकंड कट करते थे ऑलमोस्ट होल डे, थर्ड कट के लिए हम उधर जाते थे पूरा एक दिन, एंड एट टाइम्स हमें 2 दिन भी लगते थे। एंड एनीबॉडी हु इज वाचिंग, हमने अगर एपिसोड्स को जो भी प्रिपेयर भी किया, पर एपिसोड भी हमें 1 हफ्ता एडिट का, 1 दिन उसकी रिकॉर्डिंग का और मिनिमम 2 दिन उसकी प्री। मुझे नहीं पता कि कोई किसी ने कभी इतनी मेहनत की हो कि नहीं की हो, वही ना कंटेंट एग्जैक्टली। तो वो पर एपिसोड हमें 2-2.5 हफ्ते पर एपिसोड हमने किए हैं। बहुत मेहनत करवाई है तुमने हम सबसे। मैंने भी की। हाँ बिल्कुल किया, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट चलो ये तो टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, बट व्हाट वर योर द पॉजिटिव्स यू थिंक, पॉजिटिव लर्निंग्स? पॉजिटिव लर्निंग्स एक तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस, एडेड एक्सपीरियंस, वो एक एडेड एडवांटेज है। देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड talking like अभी तो मुझे कह रही थी because अभी भी मतलब जब हम रिकॉर्ड करने बैठे थे तो I feel nervous when I'm in front of the camera because I am camera shy plus I am not very open talking in public. That's why I always say कि I don't want to be a public speaker. तो वो that was kind of an additional value addition for me because confidence build हुआ, right? कि हाँ अच्छा मैं भी कैमरे के सामने बैठ के बात हाँ and the fact that I knew majority of the guests. I knew majority of them, but you didn't know majority of them. And you know, you got to know them and you interviewed people you didn't know before. And तुमने उनकी prep की और फिर तुमने उनसे. So that I'm sure that that's a learning as well. That is also a learning, and in fact you said to me कि because you always say कि I am a bit shy in front of new people. I don't open up, and that's how I am. But वो जो एक relationship building and talking to new people, but still being comfortable with them, that was also a new thing for me to learn and experiment. So ये है. What was the most, like, not most memorable, but क्या चीजें, your takeaways from this entire 3-4 months की journey? It's been a journey, a long journey. It's been a journey. It has been a roller coaster journey. Takeaways maybe in the form of कि हाँ memories क्या है मेरी, memorable moments में भी, or maybe I will take it in this way कि there were few episodes जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा special थे. For example, हमने माहीन का इंटरव्यू किया. माहीन का इंटरव्यू जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे उसी वक्त, आई एम श्योर तुम्हें भी वो फीलिंग आई होगी, द फर्स्ट थॉट वाज कि दिस इज द बेस्ट एपिसोड ऑफ द होल सीजन. इससे अच्छी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ नहीं. एंड ऑल्सो कॉन्वर्सेशन सबके साथ एक्चुअली बहुत अच्छी हुई, बट माहीन के साथ इट एक्चुअली केम फुल सर्कल बिकॉज उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा थे. So you know, we discussed Bollywood and we discussed fashion and we discussed life and grief. तो वो बहुत काफी कुछ था. अच्छी conversation हुई थी. So मतलब मेरे लिए close to heart conversation is with Maheen. So that is one of the best memories. The most entertaining I would say is the one which we did with Maram Abru and Sadifran. वो बहुत मजे का था. मतलब बहुत मजा आया उसको रिकॉर्ड कर. उसको भी रिकॉर्ड करते हुए मुझे यही फीलिंग थी यार ये बहुत मजे का. That was the reason कि हमने पहला जो रिलीज किया था एपिसोड वो हमने इनका किया बिकॉज वी न्यू के यार दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड इट विल सेट द टोन फॉर द सीजन बिकॉज वी वांटेड
टू टेल पीपल कि अच्छा किस तरह का कंटेंट आगे आने वाला है. सो ये वाले 2 एपिसोड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से सोनिया एंड कौसर का जो हमने किया था वो मजे का था. इट वाज डिफरेंट. It was very different. हाँ, Yeah. so that was nice. So हाँ, memories उस लिहाज से मतलब एपिसोड्स के लिहाज से this is what I think. उसके अलावा और भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, लाइक जैसे हम सैफायर जाते थे कपड़ों की सिलेक्शन के लिए. तो दैट वाज फॉर मी इट वाज एन एंटरटेनमेंट एंड दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट बिकॉज आई नो तुम्हें तो शौक नहीं है शॉपिंग में. तुम तो अपने ये 4 हैंगर उठा के तो कोने में खड़ी हो जाती क्योंकि वो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती ना. हाँ, तो बस मेरे लिए ये था कि वो 1 घंटे की पूरी एक्टिविटी होती है. हम जाते थे, हम कपड़े सेलेक्ट करते थे, फिर मैं जाके सारे कपड़े ट्राई करती थी. फिर जो अच्छे लगते थे कहते थे ये प्लीज पैक कर दो जिसकी हम पेमेंट भी नहीं कर रहे. सो बड़ी इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग. सो दैट वाज नाइस. व्हाट एल्स? So for me, I think the most memorable मेरे लिए prep, क्योंकि I've never really done that before because I knew the people. For example, जिस तरह मेरी फ्रेंड्स की एपिसोड थी, क्योंकि there were like 7-8 of us, and हमको we had to give everybody equal time. Same with your friends actually, that I had never met before, and then मैंने सबका तुमसे बैकग्राउंड पहले लिया. और फिर वो प्रेप की हमने कि किससे क्या क्या सवाल पूछना है, ये पूछे ना पूछे, अच्छा ये सवाल सेंसिटिव है, ये हम इससे पहले पूछ के वी ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन हियर बिकॉज वी वांटेड टू क्यूरेट इट इन अ वे दैट वी कंट्रोल द कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव अ क्यूरेटेड कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी हैव नेवर डन दिस बिफोर. सो मेरे लिए आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट. यस, यू आर राइट. कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक व्हेन वी वर वर्किंग ऑन दिस I never thought कि हमें कंटेंट को क्यूरेट करने में इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी. बिकॉज हम एक दिन बैठते थे जिसमें हम कंटेंट पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखते थे एंड देन आफ्टर 4-5 डेज हम दोबारा बैठते थे बिकॉज एक दफा में हम इतने वो खत्म हो जाता था दिमाग कि अच्छा अब इसके अंदर फर्दर कुछ ठीक करने के लिए क्योंकि देखो आपको बैकग्राउंड वर्किंग भी तो करनी पड़ती थी ना कि हम अब फॉर एग्जांपल रीमा मायरा वी न्यू देम एज co-natural owners, but हमें उनका background नहीं as such, and the questions we wanted to ask, nobody had really asked them those questions. So वो मुझे सबसे ज़्यादा actually जो technical conversation tricky लगी थी ना, वो prep, वो I think रीमा और मायरा के साथ लगी थी. अच्छा. हाँ, because उसमें ये था they were the only ones who I didn't really know personally as such. I knew रीमा, but मेरी इससे नहीं थी और मायरा से तो बिल्कुल भी नहीं थी. तो आई थिंक कि वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी था वो कॉन्वर्सेशन एंड द फैक्ट कि उनको फिर मैसेज करके उनको कहते थे कि ये हम क्वेश्चंस हैं, लेट अस नो इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एंड नॉट. एंड अगेन विद माहीन इट हैपेंड दैट वी सेंट हर द क्वेश्चंस. शी डिडंट वांट टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स बट व्हेन शी केम शी सेड we'll I'll talk about them, so which was really nice, you know. So and there were a lot of surprises also जो हम अभी पहले रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल द डे वी शॉट रीमा मायरा उस दिन आंधी तूफान बारिश थी एंड हमें दोनों को ये था कि शायद ये नहीं आएंगे. आई थिंक रिदा शमल वाली कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी थी एंड अगेन उसमें भी हमें टेक्निकली इश्यूज हमें फेस करने पड़े बिकॉज उस दिन बाय चांस लाइट बार बार जा रही थी. सो कॉन्स्टेंटली जो है वो शूट रुक जाता था. बिल्कुल. एंड दे वर आल्सो इन अ हरी. दे हैड टू लीव अर्ली एंड इट गॉट डिलेड बिकॉज आई थिंक नॉर्मली हम 1-1.5 घंटे में शूट कर लेते हैं एंड दैट वेंट अराउंड 3 आवर्स. 3.5 आवर्स कॉन्स्टेंटली लाइट जा रही थी एंड शदीद गर्मियां थी. बहुत गर्मियों में शूट किया हमने. सो वो भी एक चैलेंज था. लोड शेडिंग, लाइट है नहीं है. बिल्कुल. देयर वर अदर चैलेंजेस एज वेल. बैकग्राउंड साउंड, जहाज की आवाज आ रही है, कुत्ते की आवाज आ रही है, नीचे से बच्चा रो रहा है उसकी आवाज आ रही है. So again, these are also the learnings. कि why people go to a studio and do a shoot and don't do it at places like personal home or personal spaces, क्योंकि इस तरह के issues भी हैं. Sound, noise reduction की problems थे कि background की आवाजें आ रही हैं. Especially वो जिस दिन रिदा का shoot था उस दिन कुत्ते की आवाजें सबसे ज्यादा आई थी या मायरा रीमा वाली मरियम सबा वाले में. हाँ, तो उस दिन इतना वो कुत्ता बोल रहा था. मैं कहा यार कैसे इसको चुप करा, इसको कह भी नहीं सकते कि भाई शूट हो रहा है थोड़ी देर के लिए चुप कर. सो मरियम एंड सबा का भी आई थिंक इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन.
personal and professional. It is, for me, it was really inspiring. I was just going to say that it was also very informative. Yes, it was. So there was a lot of things which we talked in that, like एक तो ये कि information बहुत थी about legal rights of women and things like that, खुला, divorce और वो सारी चीज़ें, women empowerment की बहुत सारी बातें, plus the profession of law कि कैसे pursue करें, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने साल की डिग्री होती है, कैसे करते हैं, बार एट लॉ क्या होता है, देन व्हाट lawyers are doing to create awareness about law as a career for women. Right. So वो वाली चीज़ें, and then their personal friendship. Of course. मज़े की conversation थी. The type of incidents which they shared, it was hilarious. I can't even think of doing that. What they shared. और जितनी दफा हमने वो edit में भी सुना, हम उतना ही हंसे. हाँ, हर दफा उतना ही हंसे, हमेशा. Yeah. So ये सब, like, it's part of learning, it's part of memories, whatever you want to say. You got feedback from your friends and family, and then we had comment section में comments थे, reactions थे. What did you, because everybody asked, the first thing everybody asked, अगर काफी देर बाद किसी से बात करो तो देखिए अच्छा podcast कैसा चल रहा है, and मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तो आपने बताना है, आप audience है, कैसा चल रहा है. So what did you, how would you rate it? What do you think? सबसे पहला फीडबैक, द फर्स्ट टीजर विच वेंट आउट, कि वो जब पहला टीजर गया था ना, पीपल वर लाइक समथिंग न्यू इज कमिंग अप. एवरीवन वाज लाइक यार लुक एंड फील बड़ा जबरदस्त है. विजुअली इट वाज रियली अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज इमीडिएट रिस्पॉन्स तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स से ही आता है. एंड ऑल्सो बिकॉज वो इमीडिएट लुक एंड फील इज नॉट ऑफ अ पॉडकास्ट. हाँ, जनरली पॉडकास्ट इस तरह के, एंड that was my one of the main concerns when we were even starting, और हमने पहले pilot में भी ये बोला था, पे बात की थी कि I didn't want it to look like कि दो लोग माइक के सामने बैठे हैं और डार्क सा रूम है और बस हल्की सी डेप्थ है बैकग्राउंड्स में और एक में लैंप नज़र आ रहा है तो पीछे एक में किताबें नज़र आ रही हैं. दैट्स द मैक्सिमम विजुअल विच यू सी इन अ पॉडकास्ट. एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इट लुक्स लाइक टीवी शो. ये भी फीडबैक आया पहला टीज़र देखने के बाद. उसके बाद जब हमने जो उसके पहले क्लिप्स निकाले थे, जो पहला हमने 2 तरह के टीज़र निकाला था, एक जिसके अंदर हमने स्नीक पीक दिया था. हाँ. वो स्नीक पीक का भी जब गया था तो a lot of people called me and said कि it has a very different vibe and we really feel कि it will be very nice and we are really looking forward to it. तो बहुत positive feedback था at the very first start and then उसके बाद भी different episodes में, because हम constant teasers निकालते थे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि यार तुम लोगों का teaser का जो concept है वो बहुत अच्छा है. We really enjoy that and it gives us some highlights about the episode and it help us डिसाइड कि हमने ये एपिसोड देखना है कि नहीं देखना है. एंड ऑल्सो आई थिंक कि उसमें से भी मेड श्योर कि हमने अगर टीजर भी निकाला है ना तो वो बात कंप्लीट की है. यस. सो वो उससे ये पता चल जाए कि एक सब्जेक्ट अगर है तो वो पूरा कंप्लीट हमने बिट निकाला है उसमें से. वो टीजर एपिसोड का टीजर है बट बात कंप्लीट है. हाँ, वो बेसिकली उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर. इट्स नॉट लाइक वो जो कहते हैं उसको क्लिक वाली जो चीज कहते हैं, इट्स नॉट क्लिक बिट. हाँ, एक दो किए हमने ऐसे भी. एक दो किए थे. हाँ, intentionally, just to see के how it will work, because obviously you have to test the market by putting in different type of content to understand what क्या will work, चीजें चलती हैं और क्या चीजें नहीं चलती हैं. Whether what people say is right or not, we also need to understand that, because end of the day you also want more reach for your YouTube channel. So उस लिहाज से भी we did try to experiment different types of teasers. लेकिन बहुत सटल वे में, हम बहुत ओवरबोर्ड नहीं गए, बिकॉज अगेन वी डिडंट वांट टू डू मेन स्ट्रीम वे ऑफ मार्केटिंग द पॉडकास्ट. हाँ, बिकॉज इवन द टॉपिक्स weren't mainstream. I don't think anybody has spoken, maybe these same guests have been interviewed a lot of times, but majority का actually reaction even when they got out of the podcast was that nobody has asked these questions. And plus everyone said that we enjoyed recording it. Because it again we wanted it to be a conversation which is very light and casual, but still about very important things happening in everyone's life. So we did talk about divorce, we did talk about struggles of women in different areas, career women के क्या struggles हैं, housewife के क्या struggles हैं,
लॉस ऑफ पेरेंट का क्या स्ट्रगल है, सिबलिंग्स का क्या रिलेशनशिप है, थिंग्स लाइक दैट. बट वी टॉक्ड इट इन अ वे कि it does not sound very heavy on the heart. Right. People are listening to it, but still they are not feeling कि यार मैं बहुत sad हो गई हूँ सुन के. It still gives a feeling of relaxation कि हाँ मुझे मज़ा आया देख के. And relatability है ना, क्योंकि हम normally यही बातें करते हैं. That is why हमारे लिए उस environment को build करना the way we did, and yes we compromised on sound. Maybe हमें sound के issues इसलिए हुए क्योंकि because of the set that we decided to go with. But I think उसमें जो content था वो मुझे लगता है बड़ा अच्छा निकला है. Content was really good. सोनिया एंड कौसर का जो एपिसोड था उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे एंड अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया. कोई भी हमने किसी को नहीं देखा कि कोई अपनी हाउस हेल्प को किसी इस तरह की सेटिंग में बिठा के तो उससे इंटरव्यू करे और उनके मसले मसाइल सुनने की कोशिश करे. हाँ एंड सेम क्योंकि मेरी तो पार्ट ऑफ माय फैमिली तो एवरीबody was so excited to hear Sonia and Kausar because everyone knew that we are going to do that. So तुम्हारी फैमिली में, इवन तुम्हारे फ्रेंड्स में, हाँ everyone was like सोनिया कौसर का एपिसोड कब आएगा. Exactly. So वो because they've been a part of our family for so long, it was, and we anticipated. I told you that this is going to be a good episode. Yeah. Because nobody's done it before. Future plans क्या हैं हमारे? फ्यूचर प्लान्स भी हैं हमारे. होने तो चाहिए, एक दफ़ा तो नहीं करना था ना. हाँ नहीं डेफिनेटली. सो दिस वाज सीजन 1 एंड वी हैव डन इंक्लूडिंग दिस एपिसोड व्हिच वी आर रिकॉर्डिंग, दीज आर 12 एपिसोड्स एंड वी प्लान्ड इट इन दिस वे कि वी विल डू इट सीजन बाय सीजन. वी डोंट वांट टू डू इट इन अ वे कि हर हफ्ते एक वीडियो जा रही है एंड इट इज गोइंग ऑन एवरी डे एवरी वीक फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. Because obviously we have other commitments as well. Podcast is not our rosy roti. हाँ, जब वो बन जाएगी तो फिर हम जब वो बन जाएगी तो फिर मे बी हम हर हफ्ते एक podcast निकाल देंगे. But for now the pattern was that we will do season 1 and then we will do season 2. And based on the feedback and the responses and the learnings which we will have, we will do the next season, which will be relevant to what we have done for season 1, but obviously a bit of a different टॉपिक और थोड़ी सी थीम के अंदर वेरिएशन, बिकॉज दिस इज रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स प्राइमरली. आई डोंट वांट टू डेविएट अ लॉट फ्रॉम द मेन कोर थीम, बट देयर आर फ्यू थिंग्स इन द पाइपलाइन विच यू नो कि वी आर प्लानिंग, बट ये कि रिवील नहीं अभी मैं करी. बट येस वी विल बी डूइंग सीजन 2 इंशाल्लाह सून. इंशाल्लाह डिपेंडिंग के वो भी बूटस्ट्रैप करना है कि वो स्पॉन्सर करना है, तो वो वी विल सी कि अगर तो स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो जल्दी कर लेंगे. अगर बूटस्ट्रैप करना तो थोड़े पैसे जमा करके कर लेंगे. बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, यस सीजन 2 इज प्लान्ड, बट हम कब करेंगे वो अभी थोड़ा सा वो हम नेक्स्ट ईयर, सही है, मिड नेक्स्ट ईयर के अराउंड मे बी वी विल डू दैट. थैंक यूज एंड एक्नॉलेजमेंट्स फॉर द पॉडकास्ट. हाँ, so we do have to thank and acknowledge well and few people. In fact, people obviously, especially the first one is Sapphire, because the wardrobe was sponsored by them, and it was really kind of them to accept the proposal and be part of it at the last minute, because we just sent out an email like एक हफ्ता पहले एंड उस एक ईमेल के ऊपर ही दे गेव अस द अप्रूवल. हाँ, इमीडिएट अप्रूवल आया. एक हफ्ता पहले भी नहीं था. आई थिंक आफ्टर 2 days वी वर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग द एपिसोड, क्योंकि हमने पहला कर लिया हुआ था एंड पहले के बीच में हमने अप्रोच किया था एंड हम पहले में कोई और कपड़े पहन चुके थे एंड वी टोल्ड देम कि हम एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम उसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे. डिड नॉट इवन इंसिस्ट कि नहीं आप उसको दोबारा रिकॉर्ड करें. एंड प्लस स्पेशल थैंक यू टू दुआ, who is the PR manager for Sapphire, कि she has been helpful through and through. हम हर हफ्ते जाते थे कपड़े लेने के लिए and there was a whole process. उसकी ईमेल जाती थी, सिस्टम में एंट्री and then वापस एक्नॉलेजमेंट. तो वो पूरे प्रोसेस में even if we are calling her कि यार यहाँ पे मसला आ रहा है, तो she was giving approvals immediately. So obviously a big shout out to Sapphire. Then we had some in-kind sponsorships from a few people. There was the furniture which we had was by the Attic, सादिया बुखारी. So सादिया के पास भी हम ऐसे ही गए थे. You called her and you told her that we are doing this and she was kind enough कि यार आ जाओ और and जब हम गए तो उसने कहा जो भी उठाना है उठा लो. तो it was really nice meeting her because मेरा पहला interaction था उसके साथ and she gave her furniture for us. So coffee tables और जो हमारा main side tables थे वो सादिया ने दिए थे. Then we had the paintings, the artwork. एक गैलरी 96 से मिला था और
एक हमें जो है वो उमा ने दिया था, ड्रैगन फ्लाई ने दिया, उमा ने हमें दिया था। सो वो हमने डिफरेंट क्योंकि हमारे 2 सेट्स थे, तो दोनों सेट्स के लिए हमने वो मल्टीपल आर्ट वर्क्स जो हैं वो हमने लिए। सो अ शाउट आउट टू देम एज वेल बिकॉज दे गेव इट बिल्कुल ही रन टाइम पे। अगेन हमने फ़ोन किया कि यार हम एक नया सेट लगा रहे हैं बिकॉज लोग थोड़े हैं और हम उसको बड़े वाले सेट पे नहीं कर सकते, तो क्या करें। एंड दे वर लाइक यार ये लो तस्वीरें एंड जो पसंद है वो और बता दो। एंड फैसल केम इन एंड ही ड्रॉप्ड द पेंटिंग्स टू अस, इट वाज रियली नाइस ऑफ देम। सो दैट शोज दैट इकोसिस्टम में सपोर्ट है। एब्सोल्युटली, पीपल हु रियली वांट टू हेल्प, वो आपको हेल्प मिलती है इफ यू गो एंड आस्क फॉर इट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वो है। उसके अलावा a lot of cushions. Yes, thank you to some of the friends at your end and at my end, because हमने जितनी भी चीजें इकट्ठी की थी अपार्ट फ्रॉम के सोफा तो तुम्हारे घर का था, उस पे आते हैं अभी। We technically bootstrapped the whole activity and पूरा set हमने bootstrap किया हुआ था। We did not spend money on the set. So उसमें जितने भी pillow covers, pillows जो जितने थे, जो छोटे सेट पे और बड़े सेट पे, जो मेन ब्लू सोफा के ऊपर थे, that was by my friend Summer. From Islamabad. From Islamabad, because I went to see her and I was sitting in her lounge and I was on call with you and I said कि वो जो हमने पिलोस खरीदने थे ना वो हम नहीं खरीद रहे क्योंकि ये सारे पिलोस जो है पड़े हैं, मैं लेके आ रही। और मैं सबा के घर गई उसकी बर्थडे पे और मैंने तुम्हें कहा कि बाकी जो रह गए वो भी हम सबा से ले लेंगे क्योंकि वो पूरे हो गए। एंड देन हिना से हमने 2-3 डेकोरेशन की चीजें ली जो घर पे भी नहीं थी। और हमने बस मैंने उसको मैसेज करके पिक्चर्स भेज दी कि ये मैं उठा के लेके जा रही हूँ। सो हमने डेकोरेशन की कुछ चीजें जो है वो हमने उससे ली। उसके अलावा सोफा तुम्हारे घर का था और घर जो है वो मेरे भाई का पोर्शन तुम्हारे भाई का था। सो स्पेशल शाउट आउट टू साद एंड Asfa also for letting us use this space, the entire space. Yes. So इस तरह से हमने bootstrap किया था। So I really admire and acknowledge all these people because that's again this shows the power of relationships. Absolutely. And these are personal and professional. हमने जितनी भी जो चीजें ली, हमने फर्नीचर लिया, हमने पेंटिंग्स ली, हमने कपड़े लिए, that was professional relationship. It was all based on relationships. हम कोई उस तरह से प्रपोजल नहीं लेके गए थे कि हम आए हैं जी हम आपको जानते नहीं। They knew us and they helped us. And on the other side, all these people who gave us the pillows and decoration pieces and उस तरह की चीजें, those are all personal relationships. And it was बिल्कुल ऐसे ही था कि मतलब मैंने जाके समर को बोला, मैंने कहा कि ये पिलोस मेरे साथ जा रहे हैं, उसने ले जाओ यार। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों लेके जा रहे हैं, क्या करने हैं। हमने पिलोस वैसे वापस किए नहीं अभी तक, वो हम इस्लामाबाद जाके वापस करेंगे। ओह यस, दिस रिमाइंड्स मी कि वो पिलोस अभी तक हमारे पास पड़े हुए। So yes, thanks to all of them for supporting, and a lot of support from all the family and friends who supported us to do this and the constant part of the podcast in terms of appreciation, resharing, telling people that this is the podcast our friends are doing and helping us reach out to more people. That is also a moral support, of course, from all of them. So इन सब का बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह हम दोबारा अगली सीजन के साथ जरूर आएंगे soon. There is a special acknowledgement from my side to you, because whatever we have done is because you were the person behind it. You forced me to do it because yes, I wanted to do it. When we came back, तुमने कहा कि कब करना है, you used to call me and ask me कि वो podcast कब करना है। तो मैं हमेशा कहती थी यार करना है, but there is a lot of work behind it. टीम चाहिए, लोग चाहिए, which I clearly underestimated. You really underestimated, मतलब तुम कभी मुझे इतना पुश नहीं करती, मतलब तुम्हें बाद में पता चला कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। Exactly. So very very special thank you to you. You're very welcome. Making this dream come true. You're very welcome. And even जो co-hosting थी वो भी हमने बाद में decide की थी. I don't even remember when we thought about it कि we should co-host it. But I think it was a good decision. It was more interactive and I think it gave a different flavor to the podcast format as well. So मैंने कहा जाते जाते मैं तुम्हें भी शुक्रिया अदा कर दूं, बाद में तो मुझे ताने ना मारो। नहीं ताने तो नहीं मैंने मारने थे, but thank you so much.